in, I was not pressing enter for some reason. Abhijit will dance, then only will Mumbai win. It's the other way around now. We are already like Yes, Sonia. क्या कहा यार, क्या कहा? अभिजीत This is a really good pose for dance. It is. Really good one. अभिजीत, हमें और कोई मौका नहीं मिलेगा यार आपका डांस देखने का. अभी आप लखनऊ के लिए डांस कर लो, चलो. अभी मुंबई इंडियंस बोल रहे हैं नाचेंगे तो जीतेंगे. हाँ, उल्टा है. उल्टा है. यही हमने प्री शो में भी अभी बोला था. अभी शायद मुझे बोलना पड़ेगा कि अगर मतलब मुंबई हारेगी तो मैं नाचूंगा, तब हो जाएगा, शायद मुंबई जीत जाएगी. I mean, I don't have any words. 8 matches in a row. Absolutely no words. Not a single game. Fans उसी तरह और ज्यादा निराश, disappointed. Lucknow on the other hand, happier with 2 more points, staying in the competition. तो लखनऊ से ही शुरू करते हैं. फिर एक बार फिर केएल राहुल कैप्टन्स इनिंग्स, प्लेइंग अंडर प्रेशर, 103 in just 62 deliveries. Let's talk about him. रीमा जी. देखिए ऐसे नॉक, ऐसी फॉर्म जब आपके पास आती है ना, तो आप इसको कैप्टन्स नॉक कह लीजिए या लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कह लीजिए, लेकिन इनकी स्पेशलिटी क्या है ना, ये क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, लो रिस्क लेके रन्स बनाना पसंद करते हैं. वही इनकी बैटिंग में भी दिखा. अगर इनके साथ हम देखें, ज़्यादा कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया आगे पीछे वाले जो बैटर्स थे, लेकिन एंड तक ये खेलते रहे. ये जानते हैं कि इनके पास फॉर्म है, लखनऊ ने भरोसा जताया है, गौतम गंभीर इनको काफ़ी हाई रेट करते हैं और वहाँ पे ये अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन ना आगे बढ़ा रहे हैं. और स्पेशली मुझे लगता है वन ऑफ द फेवरेट साइड्स हो गया इनका. मुंबई इंडियंस जब भी आते हैं सेंचुरी बना के निकल जाते हैं ये. सो कहीं न कहीं जो इनिंग्स थी ना वो हर्ट किया है मुंबई को, क्योंकि आज थोड़ी बॉलिंग अच्छी हुई थी. बुमराह की बॉलिंग अच्छी हुई ना इन पैचेस. बाकी बॉलर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था. पोलार्ड ने बॉलिंग अच्छी किया. ऐसा लग रहा था कि ये टोटल गेटेबल है. लेकिन फिर बात आती है कि जो मुंबई थी उनके पास फॉर्म नहीं थी, लेकिन स्पेशल नॉक थी केएल राहुल की. बिल्कुल, मुंबई की बॉलिंग अच्छी थी. मतलब उन्होंने क्विंटन डिकॉक का विकेट भी ले लिया था. अगर केएल राहुल की विकेट ले लेते तो कहानी कुछ और होती. Joyda, your thoughts? Yeah, for sure. S.I. Biyaji, he's in the form of his life. He's in the purple patch of his career. एक टाइम में सुरेश रैना ऐसे होता था, रोहित शर्मा ऐसे होता था. तो सबका क्रिकेट में वो टाइम आता है when he can hardly do anything wrong, and he's in the middle of that. His team is benefiting from that. It's just a question, and he's been doing it for years. He's done it for every team, so it's not that he's just doing it now. And he's an India player in 3 versions. He's probably one of the chosen ones for the years to come. So this is kind of expected from him. But I thought the runs were just par for the day. I don't think it was above. Mumbai obviously not playing to their potential. Any other year, Mumbai would win this game 6-7 times out of 10. Any other year, but it's not ho nahi raha hai. And sometimes it happens. When you've won it 5 times. I know how disappointed we all are. Abhijit is. We love Mumbai. We love cricket. But it sometimes can happen. Like that's what makes sports so intriguing. You can never imagine what is going to happen. And that is the reason why I feel he's in the form of his life, and his team is benefiting from that. Yeah, he was the only one who scored, but that's how it is. When the going is good, you just make the most of it, and you thank the Lord and carry on. That's all. True, and as Reema ji was also saying that nobody else really contributed. Now here, let's talk about Manish Pandey once again. 22 of 22 is what you are. A very poor strike rate. I mean, आप 22 deliveries भी ले रहे हो और आप इतने runs भी नहीं मार रहे हो, आप contribute भी नहीं कर रहे हो. At one point, I mean, it could have even cost them the match. Like Joyda, you were saying that the score they made was something that probably could have been chased down. वो तो मुंबई का poor performance था, but that someone should have contributed there, and Manish Pandey does not look in his best form right now, and maybe going ahead needs to be replaced or done something with. Debashish, your thoughts? Yeah, we did discuss about Manish Pandey, perhaps giving a chance to a Manan Vora or a Krishnappa Gautam in that batting lineup. Perhaps he was
caught struggling because he was not middling the balls. He was struggling to rotate the strike. Only positive for Manish Pandey, I would say, is his fielding. He still can save you the 10 runs. He was outstanding at the boundary as always. But I would credit the Lucknow Super Giants bowlers the way they strangled the Mumbai Indians chase, because right from the start, if you see, they have bowled a tight length and they haven't given any room. There were some definite plans where to bowl at, and Chamira was outstanding today, and he was brilliant, just brilliant, and there was the plan behind, means, and that was evident today. Definitely, it was. Let's talk a little more about Chamira. 14 runs in 4 overs. That was brilliant to see. Abhijit. Yeah, I mean, look, today they don't have, just they had Mohsin Khan, Mohsin and Khan. yeah, I mean, so Chavira had to play that, that senior pacer role, and I think he did quite well. I mean, 4 overs, 14 runs, amazing. But Yeah. I think what happened today was, what disappointing was, 168 isn't a big score, and I think you lost by 36 runs. It shows like, Mumbai Indians are not showing the character of winning character. I can understand, like, if you lose the match by 36 runs, if the score is more than 200. But I think, and hats off to LSG's bowlers, the way they played. Even we talk about a bit of luck factor because things are not going Mumbai Indians way. The first wicket we saw how Ishan Kishan got out, Hmm. but I think in between still they had some opportunities. I mean, Kieran Pollard, what, 19 runs of 20 balls. I mean, again, as I'm been saying, like, he's emotional, retained player. Given so many opportunities, hasn't performed well. I think Mumbai Indians like have to do something. At least bringing some other people. Anyways, now no opportunity for them to reach the playoff. Give chances to the youngster who might, give some different colors to your team. True, true. Absolutely. Like at that point where Tilak and Pollard were playing, and Tilak was doing well, he was scoring some runs. We felt maybe that partnership could help them chase down the score, but we didn't get to see Pollard in his vintage form. He's someone we expect to get those 30-40 runs, quick runs of 15-16 balls, just like हमने आंड्रे रसल को देखा, पैट कमिंस को देखा. हम अभी तक पोलार्ड का वो फॉर्म फिर से नहीं देख पा रहे हैं. जॉयदा. Yeah, that is the worry. Sometimes you just leave it till the end, and you feel he will do what he has done for so many years. But Yeah. form is not at your beck and call. Maybe I don't know if age has caught up with him. Maybe if he's beginning to realize it, he's just called time on his international career. Why has this come in the middle of the Indian Premier League when he's struggling for runs? Maybe in the middle he's not feeling the same strength. It's all only on the ground you realize that you don't have it anymore. It's not in your living room. We know how Yeah. Adam Gilchrist dropped one catch and said that, okay, I'm done. So it's only in the middle you feel maybe time has run by you. Your time's over or it's coming to an end. So otherwise, why would you not wait for the Indian Premier League to get over and then take a call? Because there's a World Cup coming up, which is integral for West Indies as well. So maybe he is feeling the heat in both ways, from himself and from the team. And his bad luck is that everybody around him is also not in form. Like we're talking about Virat. Yeah, he's been a lot of form, but the team's winning. They're doing reasonably well. They're winning the odd game. Some guys, Dinesh Karthik, form of his life. True. 2 years back, last year, Dinesh Karthik struggling. KK let him go. So it's all it's a full circle. Comes what goes around comes around. Yeah. So Dinesh Karthik, everybody was cursing him last year. KK supporters were cursing him. Let the captaincy go. Went to Morgan, then went to the finals, and look what he has done this year. Morgan is not even in the IPL. So Yeah. that's how the cookie crumbles. Yeah. True. And as you said, that nobody else also doing well in the team. Ishan Kishan, we were talking about him in the pre-show as well. Rima, you were mentioning इतना पैसा डाला है ऑक्शन में इनके ऊपर, बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं और अभी तक नहीं कर पाए, और आज भी वेरी पुअर स्ट्राइक रेट, 8 of 20, not expected. देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब किसी प्लेयर को एज अ बैटर और एज अ बॉलर इनकी फॉर्म जाती है ना तो आने में टाइम लगता है और उसके लिए आपको ना ब्रेक चाहिए होता है फिर आप
थोड़ा जाते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, फिर आते हैं। लेकिन ये इन बिटवीन द टूर्नामेंट फॉर्म आना बहुत मुश्किल है। जैसे 1-2 दिन पहले हमने शो में बात की थी, जॉयदीप ने बताया था कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट टू गिव प्रैक्टिस टू ऑल द प्लेयर्स। सो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है फॉर्म में वापस आने नहीं देगी, और जितना आप खेलेंगे, जितना आप फ्लॉप होएँगे ना, आपको उतना ही टाइम वापस आने को लगेगा। और जिस तरीके से वो आउट हुए, रैंक बैट बॉल था, वो अगर आप फॉर्म में होते हैं, नहीं भी नॉर्मल भी क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो उसको कहीं पे भी आप मार सकते थे। लेकिन लक डेफिनिटली मुंबई इंडियंस के साथ ही नहीं है, क्योंकि वो खराब बॉल था, और वो एक अलग ही तरीका ढूँढा उन्होंने आउट होने का। वो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज वो नहीं आ रहा। बैटर का जब कॉन्फिडेंस जाता है ना, तो फुटवर्क नहीं आता, और फुटवर्क से आधी बैटिंग होती है। आप बैट स्विंग से आप शॉट की रेंज तय करते हैं, लेकिन फुटवर्क से ना आप बैटिंग की स्किल्स को या बैटिंग के उसको ना रिवॉल्व करते हैं, कौन से शॉट्स खेलते हैं, फ्रंट फुट, बैक फुट। अगर आप बेसिक्स पे भी आएँगे तो आगे की बॉल आगे, पीछे की बॉल पीछे, सिंपल It's a रखते great हैं। point. लेकिन यहाँ पे सिंपल भी नहीं रख पा रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है जो आज बैटिंग लाइनअप में नज़र आया। सिवाय एक तिलक वर्मा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका शॉट सिलेक्शन देखिए, उनका फुटवर्क देखिए, और बाकी सबका देखिए। That's a great बिल्कुल point. क्लूलेस नज़र That आए। that is a great point. If you just see KL Rahul, if you split screen KL Rahul batting and Ishan Kishan batting, you'll see lack of foot movement for Ishan Kishan. Even the ball he got out wide, but the left foot, when it's wide, for a left-handed batsman, the left foot is supposed to go across more so that you can get to reach the ball. It was a wide ball. So for you to reach the ball, your left foot has to go across about a foot so that you can actually cut it. But he only underaged it because he could barely reach it because he didn't move. And what Rimaji says, batting is all about judging the ball, judging it early, playing it late, and getting into position to play. The guys who do this better, quicker, more frequently are the better batters than the others. There's no rocket science to batting. And she makes a great point that they're stuck. They're not moving well. Even if you see Rohit in the World Cup when he got those hundreds, how many shots were off the front foot? Today they were pulling full to him, and he was playing from his crease, So he's hanging back. This happens to everybody. Everybody it happens to this lack of foot movement. When the runs dry up, this begins to happen. Then again, one match the runs come and it's back again. It's I don't know how to explain it, but that's just how it works. Yeah. Debashish, what do you think of Rohit's performance today? We were hoping to see more 39 runs, not too many, but good to see him play some good shots today. Yeah, he was playing well because he is getting the starts, not like Virat means. But a problem with Virat is that he is getting out to almost a similar manner, going outside the off stump, edging it to the point or edging it to the slips. But for Rohit, I think it is also all about confidence, as Joydipda rightly put. But then I would say that. There is a bit of lack of confidence in Rohit as well. Perhaps the team is not winning. The team is not in the momentum that he would have hoped, that he would have liked as a captain. So that might have putting him a lot of pressure on him. And also the fact that the Brevis was out and Ishan was also out. So he was trying to up the scoring. But it was unfortunate with the manner in which he got out, because he tried to sweep and it was a top edge, and Krishnappa Gautam got it, but then on his day that would have landed in square leg boundary. So I think when your form doesn't go your way, then you look a bit, what to say, you look a bit odd, I would say. ट्रू ट्रू। रीमा, आप मेंशन कर रहे थे कि मुंबई की बॉलिंग अच्छी थी, बुमराह आज अच्छे देखने को मिले। इनफैक्ट एक और बॉलर उनकी तरफ से ऋतिक शौकीन, उनके बारे में शेयर सम थॉट्स विद अस। देखिए अभी उनका सेकंड ही मैच था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रेगुलर मैचेस देंगे ना, तो उनके पास वो 8 है, नई बॉल से उन्होंने बॉल डाला, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाले। सो मैं देख रही थी कि कहीं न कहीं आपका अगर बॉलर्स पिट भी रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ जा रहे हैं। रोटेशन ऑफ बॉलर्स थोड़े से बेटर हो सकते थे, और ऑप्शंस इतनी है नहीं इनके पास। उनादकट के साथ बार-बार जाना पड़ रहा है, सैम्स महँगे पड़ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना वो किसी चीज़ को भी टच कर रहे हैं ना, तो वो मिट्टी में हो रहा है। नॉर्मली हम कहते हैं हम मिट्टी को टच करते हैं तो वो गोल्ड होता है। जिस तरह से एक तरफ केएल राहुल है, वो दोनों को लेके आ गए, और मैं सोच रही थी यार ये कितना पिटेगा, सामने स्काई है। लेकिन उन्होंने पहले ओवर में स्काई का विकेट ले लिया, तो कहीं न कहीं एक कैप्टन जो कुछ भी रिसोर्सेज़ यूज़ कर रहा है वो क्लिक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है
रोहित शर्मा जो जिन खुद फॉर्म से जूझ रहे हैं, जिनका बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रहा है, जिनके पास बॉलिंग ऑप्शन कम्स है, कोई बॉलर आ रहा है वो 40-40 रन देके जा रहा है, सिवाय बुमराह के। शौकीन अच्छा प्रोस्पेक्ट है उनके पास, अगर उनको कंटिन्यूअसली खिलाते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो बैक का वर्ड है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और अब हम गुजरात टाइटंस पे देख रहे हैं, लखनऊ पे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टैलेंट को बैक करना होगा। टिम डेविड को आप बैक नहीं कर रहे, शौकीन को कब तक बैक करते हैं ये भी नहीं पता। आज 2 ही ओवर डाले हैं, 2 ही ओवर पोलार्ड ने डाले, तो कैलकुलेशन जो है ना, कहीं वो माइंड गेम में लग नहीं रहा, और ऐसा होता है, टू टेंड टू ओवर्स हैपन जब आप फ्लॉप होते हैं तो। ऋतिक ऋतिक शौकीन ने भी 2 ही ओवर्स डाले, 11 रन। आई थिंक विच वाज ओके। I mean, MI also used 6 bowlers. LSG also used 6 bowlers. And I think that was wonderful captainship. Krunal Pandey का एक ओवर बचा के रखा and then बदोनी को ओवर दिया. And surprisingly, he takes wicket in his first over. I और just like to add here कि the LSG coach and the players have done a wonderful job, but even the coach and the support staff have done a great job because it's a new franchisee. Now they are at the fourth of the table, 10 points. So I think it takes a lot to a new team to build up that what's your strength and now, and I think almost now they're on the verge to playoffs. So I think credit to the support staff and the coaches as well, the way they have done team formation and on, because see MI are like playing from the first season, 5 time champions, and they are finding it difficult. So ट्रू well done, LSG. एंड एलएसजी के बॉलर्स में आपने अभिजीत आपने भी मेंशन किया था अबाउट मोहसिन खान, उनकी इकोनॉमी भी अच्छी रही, 6.75, आल्सो टुक अ विकेट टुडे. Devashish, your thoughts on Mohsin? Yeah, absolutely. When you have someone like Avesh Khan missing, who has been your go-to bowler, I mean, he is Yes. your main bowler. But then, without Avesh Khan, the manner in which that LSG bowlers have performed, it is commendable. Means to restrict the Mumbai batting I think hats off. Means, and also the fact that it surprises me because all these new upcoming uncapped Indian players, they're getting their first opportunities and they are performing. When Yes. Just as was the case with Mohsin Khan, playing his first match, and he showed tremendous temperament for someone playing his first match, and that too against Mumbai at the Wankhede, when you have the crowd support, everyone supporting Mumbai Indians, and then to come out flying colors. That speaks volumes of his character. But I am sure that when Avesh Khan will come back, this LSG bowling will look even more potent. Joyda, we were discussing this in the pre-show as well कि अभी wicket थोड़ी slow हो रही है. It is going to help the bowlers. Going ahead, who would be your picks from the spinners and the fast bowlers on such a wicket going ahead in the tournament? I think the spinners who can vary their pace, spinners who are accurate, leg spinners will have a huge role as this tournament goes by. The finger spinners will slowly come into the equation. They have not had much of a role as of now because most of the spinners we have, the Ashwins, they've got the odd wicket, but they have not been as lethal as the leg spinners have been. And I think people like Shahbaz and every other finger spinner will also come in. The Moeen Alis, the Ashwins, their role will get bigger. And I think the ones who can vary their pace, I think the Harshal Patels who can bowl different types of slower balls, they will be even more lethal as the wicket slows down because batting will become a little more difficult. Shot making will become a little more difficult, especially when the ball is a little bit older, especially once the power play is over. So I think that's the role. And slowly we'll see the mode of the games changing, because I think for initially it's been all hit through the line and stuff. I think there'll be a bit of change. We've seen a bit of a dip in the runs being scored as well, which is something it's understandable. 20 games in one game, with all pounding that the pitches are taking. This is kind of expected, but it's good to see that still very competitive games for Mumbai is just not happening. That's all. I mean, KL Rahul played and missed 10 balls I can remember off my head. When he started off. So you need that luck. And Devashi makes a great point. He says that, actually Rohit is not out of form. Rohit is just not getting. Rohit is looking good when he's batting, while as some of the others are out of form. But for him, it's just not happening. And the pressure, knowing that the team is not doing well, nobody's in form around the bowler. So it's all, it's on. It just came to press conference. He was looking 10 years older. That happens when your team doesn't perform. True.
the pressure of captaincy, the team not performing as a unit, all departments failing. There's really a lot of work to be done, but also need to be keep calm and Yep. move on. And maybe the next season will be theirs. Who knows? फिलहाल लखनऊ बहुत खुश होंगे 2 पॉइंट्स लेकर और अगेन थोड़ा और ऊपर आकर टेबल पे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. कल किसका मैच है रीमा जी? किसका है? अरे CSK वर्सेस का पंजाब. मैच है कल, आपको पता ही नहीं है? ओहो, मुझे लगा आप बताते तो मैं वेट कर रही थी. सब पता है इनको, सीएसके का सब मैच पता है. और सीएसके का मैच है किसके अगेंस्ट? पंजाब. पंजाबी भी हो ना आप तो रीमा? मैं पंजाबी हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरी तो 2-3 टीमें खेल रही हैं इस बार. एक है पंजाबी हूँ तो पंजाब की, दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ में गौतम गंभीर बैठा है, वो हमारे दिल्ली का है, और दिल हमारा येलो है. सो आधा आईपीएल तो मेरा है. आरसीबी वेदा का. सर, वेदा, आरसीबी ने कल और 68 किए. 68 किए आरसीबी ने, बाहर हो गई. आज वेदा की टीम ने 58 किए, दिल्ली के अगेंस्ट आउट हो गई, बाहर. ओह माय गॉड. असर तो पड़ना दैट ही इज था. हार्ट ब्रेकिंग. दिल्ली जीत that गए is लेकिन. sad. चलो. Rima ji has a great life. CSK, if CSK doesn't win, Delhi wins. If हाँ, सीएसके नहीं तो if पंजाब भी if जीती Veda तो भी if उनकी Veda गेम है. if Veda doesn't win, Delhi wins. सी विन विन सिचुएशन है मेरे पास आ रही है, इसलिए एक टीम नहीं विन-विन लेने के होनी चाहिए. 4-5 टीम है. बस जॉयदा नहीं जीतने चाहिए. हाँ, ज्यादा नहीं जीती. केकेआर खुद ही हार आईपीएल रहा है, भी मैं क्या जीतेगा करूं? तो आईपीएल भी जीतेगा तो रीमा जी विल फाइंड आउट सम रिलेशन विद द टीम दैट आईपीएल विन. कौन जीतेगा? प्लेऑफ तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, अभी भी बार-बार तो हार रहे हैं केकेआर, और अभी भी कह रहे नहीं हैं हम हम प्लेऑफ तो में करेंगे. ये पहली टीम नहीं बनेगी जो बिना जीते प्लेऑफ पहुंचेगी. नहीं, लेकिन हम तो काफी प्लेयर्स खेल चुके हैं. तो अभी क्या हो गया? दिल्ली तो अब दिल्ली कभी नहीं जीतोगे? लास्ट ईयर रनर अप कौन था, भूल गया. चैंपियन तो कौन सीएसके कौन था. था? नहीं, शायद दिल्ली था. अच्छा. हाँ, केकेआर तो फाइनल चैंपियन कौन खेला था? नहीं लास्ट सीजन. चैंपियन कौन दिल्ली था लास्ट टाइम? दिल्ली 2 लास्ट बार सीजन जीता केकेआर है और था. 1 बार रनर अप हुआ है. याद है हाँ. आपको? लास्ट टाइम केकेआर चैंपियन था. नहीं, रनर अप था शायद. दिल्ली कहाँ था? हाँ, मैं तो सीएसके क्यों, दिल्ली वाले से पूछो. अच्छा अच्छा. कल अच्छा, सीएसके का रीमा जी मैच का अगर है. आपका पांच जॉयदा, कन्वीनियंटली जो अगर आपका जीतेगा ना 5 टीम उनमें से जॉयदा, कोई ना अगर कोई आपका टीम 5 रीमा रीमा जी टीम की है का तो होगी. तो क्वालिफाई रीमा करेगा. जी का 3 टीम है. आरसीबी अभी रीमा जीता नहीं है. रीमा जी के 5 टीम है 8 में लास्ट ईयर तक. हाँ. 3 टीम हाँ. तो उनमें से क्वालिफाई कोई हो ही भी जाएगा. जीते, हाँ. उनमें से कोई भी जीते, जीत उनकी है. और जॉयदा और रीमा, 2 मिनट पहले मुझे अभिजीत और देवाशीष आप बताइए आपके पिक्स क्या हैं? सीएसके और पंजाब में से कौन जीतेगा कल? अभिजीत. टफ मैच है दोनों. मतलब कैपेबल है. एक नंबर 8 पर है, एक नंबर 9 पर है. सो बट आई थिंक मैच वापस वानखेड़े पे होने वाला है. हम्म. तो आई थिंक आई गो विद पंजाब टुमारो. ये हमेशा उल्टी साइड जाते हैं, हमेशा. उनकी ये मतलब उल्टी साइड, अपोजिट साइड जाते हैं. जब भी मैं बट सीएसके बोलती हूँ बट तो इधर जाते हैं, आरसीबी बोलती हूँ. परसों भी मैंने हैदराबाद बोला था तो कल जीत गई वो. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. आपके बोल अंडरडॉग से होके मैं. हैदराबाद पिछले 4 मैच जीत रही है. वो देख के नहीं सामने कौन आ रहा है, तो जीती जा रही है बस. नहीं बट किसके अगेंस्ट जीती आई है? लाइक टू सपोर्ट अंडरडॉग्स. Abhijit, they forgot your orange t-shirt the evening before. You Yeah, wore yeah, it on the night before. right. And he didn't take it Decisive off till the game. last ball. That's the key. Yeah, that was तो it. सर मुंबई That's के लिए what ब्लू made भी them पहन win. लो. अभी मुंबई के ब्लैक लिए ही डांस पहनना चलेगा. पड़ेगा. जर्सी इधर नहीं ब्लैक चलेगा, और व्हाइट कलर नहीं पहनना चलेगा, पड़ेगा. डांस चलेगा. अभिजीत मैं बता रही हूँ. एक बार डांस डांस तो हो कर. जाएगा. बिफोर आईपीएल एंड्स डांस तो कर ही लेंगे. Let's किसी न किसी let's टीम के लिए let's कर ही ask the लेंगे. Chelsea stroke ICC man. Chelsea on the top, ICC on the body. I don't know what's in the bottom. कुछ तो लिंक रख ले यार. Chelsea और ICC कुछ तो लिंक रख ले. स्पोर्ट का लिंक तो रख ले यार. Devashish is a true sports fanatic. He's got all the caps. लिवरपूल का ट्राउजर होगा. जीत गए आज. बताइए Oh, देवाशीष. Devashish, your team I'll go. tomorrow. I'll go with Chennai Super Kings. See, Because they आपको have कुछ won भी 2 पहनना matches. पसंद है. 2 मैचेस जीता है और खास करके जिस अंदाज से जीता है, माही द फिनिशर
पता नहीं है, बार बार तो होते नहीं है, मगर अभी भी जिस तरह से उसने लास्ट बॉल पे जिताया, तो आई वुड बैक चेन्नई सुपर किंग्स। जब तक धोनी है ऐसा बार बार हो सकता है, हाँ, बिकॉज उम्मीद मैं रख पिछले सकते हैं। आई वी वर बिल्कुल। इन द सेम प्लेटफॉर्म, जॉयदीप दा, रीमा जी वाज आल्सो देयर, मुंबई इंडियंस के साथ ही मैच था वो, मगर जिस तरह से वो जीता चेन्नई ने, तो आई वुड नॉट काउंट चेन्नई आउट। वेल चलो कोई तो है ओके मेरे देन, साथ। जॉयदा तो साथ देना चाह रहे हैं सीएसके का, पर बोल रहे हैं पंजाब। Exactly. Because I feel आने दो, केकेआर आने from दो। cricketing point of view, I think Chennai is the strongest side. They're in a better place. I think Punjab is very volatile as a side. They could play superbly or they could really have an off day. And in the Yeah, IPL, it's a long tournament. You want teams to be consistent. The best teams true. ever in the IPL have been consistent. They didn't have very good days and very bad days. So that is where I feel Kings Punjab is lagging behind. I think Chennai Super Kings is a better team, and that's exactly the reason why I'm supporting Punjab. जिस दिन मुंबई जिस के दिन साथ तो कोई हो केकेआर और मुंबई का मैच होगा ना, मैंने मुंबई को चूज करना है। जिसको अब अभिजीत भी चूज नहीं करेंगे ना, वो मुंबई तभी भी चूज नहीं करेंगे, अभी तब मैं भी चूज अभिजीत करूंगी। साथ नहीं छोड़ने वाले मुंबई का। नहीं नहीं, ऐसे कैसे। कैसे छोड़ेंगे? छोड़ देंगे, रिया डांस जी, करने हुआ रहे क्यों कोई मुंह भी, में। सबका तो पूछ लिया, आपका कुछ बताइए। चलो जॉयदा, मैं आपका साथ दे देती हूँ, पंजाब का साथ दे देती हूँ। ओके, मैं रख रही हूँ। यो। ड्रॉप आउट हो रही, मेरे को नहीं करना। मैं नहीं खेल रही। कल ऋषभ पंत ने कहा था ना, आजा आजा हम नहीं खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रही आज। जस्ट बिकॉज सीएसके मान जाओ, जैसे दबिशिस ने कहा ना कि भाई हाँ, लिवरपूल पहनो, प्रो कबड्डी पहनो, आईसीसी पहनो, तुम कुछ पहनो, इन्होंने सीएसके को सपोर्ट किया है, सब नहीं तो अलाउड है देवाशीष आज आपको। सीएसके फुटबॉल बड़ा के कौन। स्पाइस पहन के बैठा है। अलाउड है आपको, एक पैर में फुटबॉल का, एक पैर में क्रिकेट का, अलाउड है। आपने सीएसके को सपोर्ट किया, देखना कल सीएसके कैसे पेलेगी पंजाब को। चलो देखते हैं। फिलहाल लेट्स कॉल इट अ नाइट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग मी, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। गुड नाइट, टेक Good केयर। night. Good night. गुड Thank you. नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। नाइट।